See this. First of all, cyclohexane ring. It is present in the chair conformation form, right? So when I have chair conformation form, this is for cyclohexane. Okay, let us number this ring as 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, now when I'll talk about the concept of pseudo rotation. Pseudo rotation में क्या होगा? यहाँ पे ring flipping होने वाला है. Okay, so ring flipping जब होगा, ring flipping and inversion जब होगा तो ring का structure will be different. That will be completely different. So it will be like this. So it's like this. So now I have, this is first carbon here, this is second, this is third, this is fourth, this is fifth and sixth. Okay, when it will go to the next ring flipping, again I will get the original structure like this, but this time this is 1, this is 2, 3, 4, 5 and 6th. Okay, so every time अगर मैं यहाँ से यहाँ पे कंपेयर करूंगी, ये मेरा pseudo rotation है, ये मेरा pseudo rotation है. Similar type equivalent structure is obtained, arrangement is same. यहाँ से यहाँ पे देखोगे तो ये रिंग फ्लिपिंग है, यहाँ से यहाँ पे देखोगे तो रिंग फ्लिपिंग है. इन शॉर्ट दो फ्लिपिंग अगर मिला के बोलोगे तो एक pseudo rotation हो गया तुम्हारा. Okay, so now look at the first ring. Now I'm looking at the Newman projection. So when I'm looking at the Newman projection, the fourth carbon is in front of me. So now this is the fourth carbon atom, it is in front of me. I can see on the fourth carbon atom, there are 3 atoms here. These are 3 atoms here. This is proton, and this is third carbon. So this is my third carbon, this is proton, and this is proton. Okay, on the back side, since I'm looking in this way, on the back side I have fifth carbon. Now this fifth carbon also has 3 atoms attached here. So 1 proton, second proton, and this is my 6th carbon atom. This is 6th carbon atom. Carbon तुम्हारे सामने है. So now you understand the angle between third carbon, fourth carbon, fifth carbon and 6th carbon. What I said? Third carbon, fourth carbon, fifth carbon and 6th carbon. अगर तुम देखोगे fourth and fifth एक line में है, and we are looking at them to view the Newman projection. Okay, and the third is attached to fourth and 6th is attached to 5. So there is some dihedral angle between them, and that dihedral angle is 60 degree. That's why now how many carbon you have written here? 1, 2, 3, 4. There are 4 carbon, and 4 carbon we call it as butane. Though it is a part of a ring, but we are saying it as a butane. Okay, so we call this as the Gauss butane unit. Okay, तो ये तुम्हारा Gauss butane unit हो गया. तो अभी तुमने क्या consider किया? Third, fourth, fifth is on back side and 6th is here. ठीक है? Now this is, you are imagining this particular Gauss butane unit while considering the 4th and 5th bond. अब तुम क्या देख रहे हो? यहाँ पे तुम क्या देख रहे हो? The third carbon is in front of me and 4th carbon is on the back side. So when I'll draw the Newman projection for this, third carbon is in front of me, उसके यहाँ पे right and top side पे second carbon है. So definitely these two are hydrogen. See, these two are hydrogen and this is second carbon. यहाँ पे देखोगे back side का proton, right side down पे fifth carbon है. So definitely these two are protons. So now we are going to imagine the angle between 2, 3, backside पे कौन है? 4
and 5. So it is 2, 3, 4 and 5. तो इनके बीच में एंगल कितना हुआ वापस? गॉश ब्यूटेन एंगल. अब तुम ये नंबर्स देख रहे हो, यहाँ पे सीक्वेंस देख रहे हो, यहाँ पे क्या था? स्टार्टिंग क्या था मेरा? 2 था. 2, 3, 4, 5. यहाँ पे क्या स्टार्टिंग है? 3. तो इसके प्रीवियस में कहां से स्टार्टिंग करूंगी? सो इट इज 1, 2, 3, 4. मतलब अगर तुमने इसका नेक्स्ट स्यूडो रोटेशन ट्राई किया तो नेक्स्ट स्यूडो रोटेशन कैसे होगा? Next pseudo rotation will be like this. Okay. And when you will have the next pseudo rotation like this, you will have one carbon here. So this is 2, 3 and 4. तो जब इसको imagine करोगे, so that will be angle between 1, 2, 3 and 4. Again it will be gauche butane. Okay. So like this I can continue further. So I can start with 4, 5, 6 and 1. Then I can say 5, 6, 1 and 2. Then I can say 6, 1, 2, 3. मतलब हमेशा देखो, तुम इस बार देख रहे हो न्यूमैन प्रोजेक्शन बिटवीन 2 and 3. यहाँ पे देख रहे हो बिटवीन 3 and 4. Then 4 and 5, 5 and 6, 6 and 1 and 1 and 2. So you are observing the Newman projection between all these bonds, and everyone knows that when I have a cyclohexane ring, every bond is it is having the staggered conformation, and when it is having the staggered conformation, so every bond will show me the gauche butane unit between these two carbon. Because यहाँ पे कैसे है, रिंग को फ्यूज करना है ना तुम्हें. एवरी दिस रिंग अगर तुम देखोगे यहाँ से थर्ड एंड फोर्थ से देखोगे तो सेकेंड एंड 5 कार्बन जो है, सेकेंड एंड 5 ये आगे जाके रिंग को फ्यूज कर रहे हैं. So if it is fusing that ring, the angle between the 2 and 5 has to be gauche butane, because it's a 6-membered ring. It cannot be the anti-butane unit. It has to be gauche butane. So every bond has one gauche butane. तो कितने bonds है cyclohexane में? 6 bonds. So every bond is contributing to one gauche butane unit. And that's why there are total 6 gauche butane units in cyclohexane ring. Pseudo rotation से हमेशा एक एक एंगल फ्लिप होते जाएगा. और इट्स नॉट अ कॉन्सेप्ट ऑफ स्यूडो रोटेशन. ये कैसे है कि तुम कैसे ऑब्जर्व कर रहे हो. अभी मिला मैं यहाँ से देख रही हूँ, तुम सेम स्ट्रक्चर में भी न्यूमैन प्रोजेक्शन अलग अलग देख सकते हो. तुम 2 and 3 को भी देख सकते हो, तुम 5 and 6 को भी देख सकते हो, तुम 6 and 1 को भी देख सकते हो. सेम स्ट्रक्चर में भी अलग अलग जगह पे तुम न्यूमैन प्रोजेक्शन देख सकते हो. इन शॉर्ट वो स्यूडो रोटेशन से रिलेटेड नहीं है. मैंने स्यूडो रोटेशन इसलिए दिखाया क्योंकि मैंने एक फिक्स पॉइंट तुम्हें दिया to observe it. But these 6 gauche butane units are present in a one structure itself. Every bond is having one gauche butane unit that you are supposed to remember. Okay, so it's not like कि cyclohexane 6 pseudo rotation देता है. No, it's not a concept. उससे related नहीं है. Every structure has 6 gauche butane unit. यहाँ पे मैंने तुम्हें क्या बोला था, स्यूडो रोटेशन कॉन्सेप्ट क्यों समझाया? बिकॉज मैंने तुम्हारा एक पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे था जो फिक्स किया था मैंने, हम यही से ऑब्जर्व करेंगे. दैट्स व्हाई मैंने तुम्हें अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू दिए और इसलिए स्यूडो रोटेशन दिखाए. बट ये जो 6 गॉश ब्यूटेन है वो एक ही मॉलिक्यूल में है. तो अगर मैं यहाँ से देख रही हूँ तो मुझे ये वाला गॉश ब्यूटेन यूनिट दिखेगा. अगर मैं यहाँ से देख रही हूँ, 5th और 6th से देख रही हूँ, तो 5 and 6 मतलब मुझे ये गॉश ब्यूटेन दिखेगा. यहाँ से 6 and 1 से देख रहे हो तो ये वाला दिखेगा. सो हर एक बॉन्ड में एक गॉश ब्यूटेन यूनिट है, एंड दैट वी आर ऑब्जर्विंग. Okay, so now we are going to do the enthalpy calculation, and for this enthalpy calculation we are going to talk about this gauche butane units. Okay, now before we start for the Decalin structure, let us start with the cis Decalin. Okay, अब cis Decalin का सिर्फ ये जो A रिंग है, फर्स्ट रिंग, हमें वो A रिंग कंसीडर करना है. हमें दूसरा रिंग कंसीडर नहीं करना है, हमें सिर्फ ए रिंग कंसीडर करना है. ओके, सो नाउ suppose if I'm talking about a ring, I'm going to write down all the gauche butane units which are present in ring A. Okay,
So I'm writing this. Just wait. Okay, so now this is for a ring, that is for cis structure. There is a gauge angle between 1, 9, 10 and 4. 1, 9, 10 and 4. You can see this 1, 9, 10 and 4. That means I'm observing here. This is my observation point. So if I'll draw the Newman projection, I'll get the gauge butane unit between these two. Okay. Similarly, there is a gauge butane unit between 9, 10, 4, 3. 9, 10, 4 and 3. Again, there is a gauge butane unit present between 10, 4, 3, 2. 10, 4, 3, 2. Then 4, 3, 2, 1. 3, 2, 1, 9. 2, 1, 9, 10. अभी हम जाएंगे रिंग नंबर बी के पास. Okay, and we'll find out how many gauge butane units are present in ring number B. Okay, and then 9, 10, 8, 6, 7, 6. Okay, तो कितने हो गए total decalin में? Now my next question to you is, this is the trans decalin structure. Okay, and if I'm concentrating on ring A now, can I have the same gauge unit like this, or I'll have the different one? Same. You will have the same one. What about the ring B? Right? ये वाला है. और अगर बाकी सारे कंपेयर करोगे तो तुम्हें सेम नंबर्स मिलने वाले हैं, अलग नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि दोनों साइक्लोहेक्सेन रिंग्स है, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता प्रोटॉन ऊपर है या नीचे है. इफ यू वांट यू कैन ट्राई न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर ईच एंड एवरी बॉन्ड and you observe it. So every bond is having the gauge butane unit. Definitely it is having the gauge butane unit. Okay, so what we can see is right now the gauge butane unit for cis decalin and the trans decalin is almost same. इसके पास कितने गॉश ब्यूटेन यूनिट्स है? अकॉर्डिंग टू द कैलकुलेशन इट हैज 12. एंड इसके पास कितने हैं? इसके पास भी है 12. ओके, अब हमें ध्यान देना है रिंग फ्यूजन के ऊपर. ऑफ कोर्स रिंग फ्यूजन से कुछ तो डिफरेंस क्रिएट हुआ होगा ना, वही हमें अभी देखना है. ओके, पहले हमने देखा कि इंडिविजुअल रिंग्स में कितने गॉश ब्यूटेन यूनिट थे. नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट the ring fusion. So ring fusion is something we are going to observe the bond fusion between these two rings. Okay, अगर तुम देखोगे इन शॉर्ट जो गॉश ब्यूटेन यूनिट होता है, गॉश ब्यूटेन यूनिट तुम्हारा ऐसा होता है और ट्रांस ब्यूटेन यूनिट तुम्हारा ऐसा होता है. राइट तो इन शॉर्ट क्या बोलते हैं हम लोग? गॉश ब्यूटेन यूनिट को जनरली ये सिस फॉर्म में, सी फॉर्म में आ जाता है, और जब भी तुम्हारा एंटी ब्यूटेन यूनिट होता है वो जेड फॉर्म में आता है, जी फॉर्म में आता है. तो ये सी शेप होता है और ये जेड फॉर्म होता है. नाउ सी द कॉमन एटम्स, लाइक वी आर गोइंग टू सी द रिंग फ्यूजन बिटवीन दिस एंड दिस रिंग. ओके, अब एक जो एंगल बता रही हूँ ना वो देखो. See this 1, 2, 1, 9 and 8. 2, 1, 9 and 8. ये कॉम्बिनेशन कहीं ये 12 में कवर हुआ है क्या? देखो. हाँ, no, ये 2198 का शेप क्या है? जी है या सी है? Got it? And जब भी वो C होगा, what will be the gauge angle? Sorry, what will be the angle? Torsional angle.
it will be gauche. 60. 60. Gauche. तो apart from this regular, जो cyclohexane में regular 12 होते हैं, apart from that, the cis decalin also has one more gauche butane that is present between 2198. अगर तुम देखोगे यहाँ पे 2198 कहीं पे भी कवर नहीं हुआ है. This is something between two rings which is common. ठीक है, और एक ड्रॉ कर रही हूं मैं, अभी ऑब्जर्व करो. 4, 10, 9, 8. Sorry, 4, 10, 9 and 8. बताओ क्या है वो. उसके ऊपर एंगल सी फॉर्म है, राइट. So this is 4. What I said, it's 10. फिर है 9 और है 8. ये वो 12 में कवर हुआ था क्या? कहीं पे भी कवर नहीं हुआ है, राइट. सो दिस इज अगेन अ न्यू वन. और कुछ मिल रहा है? देखो सी फॉर्म में कहीं दिख रहा है किसी को? 4, 10, 5 and 6. Observe this. 4, 10, 5 and 6. This is also C shape. Okay. So I'm writing here. This is 4, 10, 5 and 6. So this is 4, 10, 5 and 6. और दोनों के बीच में कॉमन सिर्फ यही 3 है जो सिस में प्रेजेंट है. तो सिस के पास खुद के 12 गॉश ब्यूटेन तो है. अपार्ट फ्रॉम, ड्यू टू द फोल्डेड स्ट्रक्चर, it has 3 gauche butane unit extra. So total it has 15 gauche butane units. अब यही 3 है ना, यहां पे ऑब्जर्व करो. 2198. This is a Z form. 4, 10, 9, 8. 4, 10, 9, 8. Again it's a Z form. Then 4, 10, 5, 6. Again this is a Z form. So there is no additional. So this is 12 plus 0. No additional gauche butane units. So total 12. So who is having more number of gauche butane units? Cis. Gauche butane unit, each gauche butane unit contribute to around 3.35 kilojoule of energy. अब तुम बोलोगे ये energy contribute क्यों करता है? अगर मैं Z फॉर्म और C फॉर्म में पूछूं कौन सा फॉर्म स्टेबल होगा? तुम्हारा साइक्लोहेक्सेन चेयर कॉन्फॉर्मेशन में है. So none of the bond is having the eclipse conformation. All of them have the staggered conformation. It is only the thing whether the two carbons are present with a 60 angle or whether it is present at 180 angle. जब 180 angle है तो तुम्हारा Z form आता है और 60 angle है तो तुम्हारा C form आता है. अब 180 angle, of course, because the two carbons are far away from each other, so they will have the less strain. So definitely when I talk about the cis now, cis has the more gauche butane. जितना gauche butane ज्यादा होगा उतना ही molecule में strain ज्यादा, because it is causing the repulsion. So every gauche butane unit is contributing to 3.35 kilojoule of energy. So if I'll multiply this by 3, so that is around 10.05 kilojoule per mole. So in short, your cis form is having more enthalpy compared to your trans form. And how much is the more enthalpy? That is around 10.05 kilojoule per mole. Okay. Now there is one rule. This rule is called as Avasquita rule. Now the Avasquita rule says the relevant physical properties. Now which are the physical properties? Boiling point, density, refractive index. All these properties will be higher for the cis isomer. Why it is for the cis isomer? Because your basic Avasquita rule says the between the two aliphatic epimers or between the two conformation which do not differ appreciably in the dipole moment. If I look at this cis form and if I look at the trans form, दोनों भी hydrocarbons है,
तो दोनों भी नॉन पोलर है, दोनों के बीच में पोलैरिटी का कोई डिफरेंस नहीं है. सो दे डोंट हैव अप्रिशिएबल एनी डिफरेंस इन द डाइपोल मोमेंट. The one with the highest enthalpy will have the higher boiling point, higher density, and higher refractive index. Again, I'm repeating. According to the Avascuita rule, the molecule, the two molecules which don't have difference in the dipole moment. Right now we can see they don't have difference in the dipole moment because both of them are hydrocarbons. Both of these molecules are non-polar in nature. So if you have to compare the properties between the two, the one which is having higher enthalpy, तो दोनों के बीच में higher enthalpy किसका है? Cis का है. So the one which is having higher enthalpy will show higher boiling point, higher density, and higher refractive index. That's why it has been seen that the cis decalin is generally showing the higher physical property compared to the trans decalin, and this is complete calculation has been done from the enthalpy. अगर तुम देखोगे तो previous slide में we have calculated the entropy. How we calculated the entropy using the symmetry number, that is sigma. And this is the slide where we are calculating the Gauss butane units in order to calculate the enthalpy. So now I have the calculation for delta S and I have calculation for delta H. I have both these calculations with me, and that's why definitely I can calculate the delta G. So this is the calculation, and using this calculation we can do the this enthalpy calculation. अगर तुम देखोगे तो तुम्हारा डेल्टा एस ऑलरेडी निगेटिव है एंड इसके पास ये एंट्रोपी ऑलरेडी ज्यादा है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा. सो दिस विल बी एडेड. तो ये 10.505 हो गया एंड दैट इज अराउंड यहाँ पे अगर कैलकुलेशन में देखोगे तो 5.8 एक्स्ट्रा एनर्जी था उसका. तो ओवरऑल डेल्टा जी भी अगर देखोगे तो सिस का पॉजिटिव है एंड ट्रांस का अगर देखोगे तो निगेटिव आएगा. So if I'll see, if you remember the free energy जितना negative होता है उतना ही that particular molecule or that particular process is spontaneous in nature. Spontaneous. Okay, so that is overall calculation which is showing your cis decalin is unstable compared to the trans decalin. Because overall in the cis decalin you will find there is always flipping of the ring, which is possible because ring inversion is easily possible. Ring flipping होता है. ट्रांस में रिंग फ्लिपिंग नहीं होता है because it's very rigid structure and it causes the opening of the ring. So ring flipping is not possible, and that is being again proved by the entropy calculation and enthalpy calculation. Everything is showing us the cis decalin is unstable compared to the trans decalin. You're supposed to simply say at the end ki number of Gauss butane unit in the cis decalin, 3 Gauss butane units are extra in the cis decalin compared to the trans decalin. And every Gauss butane unit is contributing to 3.35. So around 10.05 enthalpy is higher in cis decalin compared to the trans. Then you can see according to the Avascuita rule, the one which is having the higher enthalpy will show higher boiling point, density, and refractive index. That's why cis is unstable compared to the trans. The next part, that is ring inversion. So ring inversion हमने already पढ़ा है that trans decalin cannot undergo the ring inversions easily. Okay, because the ring inversion causes the opening of the ring, while the cis decalin can undergo the ring inversion very easily. Now, why am I taking this ring inversion again? You will say कि इसके पहले भी तो हमने ring inversion इतनी बार पढ़ा है और prove भी किया है कि trans cannot undergo. Then why? Again, this is a separate property. This is something we are going to prove the ring inversion is possible only for the cis decalin with the help of NMR spectroscopy. Okay. Now, we are going to talk about the NMR on this for the protons which are present at the bridgehead carbon atom. Do you remember I told you कि this cis decalin can undergo the ring flipping easily? And जब भी ring flipping होता है, flipping में क्या होता है? जो bonds axial है वो equatorial बन जाते हैं और जो equatorial है वो axial बन जाते हैं. So when I'm talking about this, the proton at the bridgehead carbon atom, this particular proton,
Right now you can see it is at the equatorial position. But we have said the cis decalin can undergo the ring flipping very faster. It can get converted to one form to other form very quickly. So there is a continuous ring flipping going on. तो ये जो प्रोटॉन है कभी एक्सियल रहेगा तो कभी इक्वेटोरियल रहेगा. So there is no fixed location for that because flipping process is very fast. तो जब मैं NMR ले रही हूँ, NMR पे हमेशा याद रखो, NMR spectroscopy can distinguish the axial and the equatorial proton because जब प्रोटॉन एक्सियल होता है या इक्वेटोरियल, सी इमेजिन ना, अगर ये प्रोटॉन एक्सियल पे गया तो ये प्रोटॉन यहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पे जब जाएगा इट्स गोइंग टू एक्सपीरियंस द डिफरेंट काइंड ऑफ द स्पिन स्पिन कपलिंग and different kind of chemical environment or different type of an electronic environment. So when it will experience different type of electronic environment, definitely the protons are going to get affected. तो जब मैं इसका NMR लूंगी, so the NMR proton, that is NMR spectroscopy, will be giving me the two different peak, or there will be different type of intensities for the axial and the equatorial proton. So the whatever the NMR spectroscopy I'm going to get, that will be the average of the axial and the equatorial. Whereas यही 9th का प्रोटॉन अगर तुमने ट्रांस में देखा, ट्रांस के लिए तो रिंग फ्लिपिंग पॉसिबल ही नहीं है, and that's why I have only one fixed axial proton over here. ये कभी इक्वेटोरियल में नहीं जाएगा क्योंकि अगर ये इक्वेटोरियल में गया तो 8th बॉन्ड जो है उसको एक्सियल पे जाना पड़ेगा, और अगर वो एक्सियल पे जाएगा तो ये डिस्टेंस बढ़ जाएगा. So 8th bond will always prefer to have the equatorial position. That means this 9th carbon atom proton will always have the axial position. So whatever the NMR spectroscopy I'm going to get only for the axial proton. So this is something average and this is something a fixed position, and that's why I'm going to get a very sharp peak over here. Well, this is a completely, you can say, a narrow peak, you can say, or the average out peak you will get in the cis decalin. So this kind of the NMR spectroscopy is confirming again that the cis decalin undergoes the flipping because it gives you the NMR proton peak which is averaged out or which is having a narrow peak, whereas a sharp peak is obtained in the case of trans decalin. तो अगर तुम्हारे पास कंपाउंड है और तुम्हें डिस्टिंग्विश करना है ये कंपाउंड सिस डिकैलिन है या ट्रांस डिकैलिन है, तो यू कैन इजीली डिस्टिंग्विश इट यूजिंग NMR spectroscopy. ये okay. So this is about the NMR spectroscopy which is confirming that the cis decalin undergoes the flipping structure. So now we are going to talk about the effect of angular methyl group. Now what do you mean by angular methyl group? तुम अगर यहाँ पे bridgehead कार्बन देखोगे 10th वाला या फिर यहाँ पे 9th वाला, हमने क्या किया है, उस bridgehead कार्बन को substitute किया है. We are not doing substitution at any other carbon. बाकी जगह पे करोगे तो it will show you the same effects like your cyclohexane ring. We are not talking about that. We are talking about the substitution at the 10th carbon atom. Okay. अब यहाँ पे कुछ observations check करो. When I'm talking about this particular cis decalin, now because of this additional methyl group, अब अगर याद है तो उसके पास गॉश ब्यूटेन यूनिट कितने हैं सिस के पास 12 because of cyclohexane ring plus 3 additional थे. 3 additional कौन से थे? 2, 1, 9 and 8, 4, 10, 9 and 8, 4, 10, 5 and 6. ये 3 additional थे, right? अब जरा ये मिथाइल ग्रुप को चेक करो और मुझे बताओ बिकॉज ऑफ दिस एडिशनल मिथाइल ग्रुप और कहीं पे सी फॉर्म बना है क्या? वी कैन सी दिस 3, 4, 10 and methyl group. This is forming a new C form. 1, 9, 10 and CH3. ये देखोगे ये इसका गॉश ब्यूटेन अगर ड्रॉ करोगे ना, सॉरी ये न्यूमैन प्रोजेक्शन ड्रॉ करोगे, गॉश परफेक्ट दिखेगा. इफ यू वांट सी दिस इज 10th कार्बन एटम इन फ्रंट ऑफ मी, 9th इज बिहाइंड, इसका CH3 यहाँ पे है एंड दिस इज माय 4th कार्बन एटम. ओके, और यहाँ पे कौन सा कार्बन है? 5th कार्बन एटम है.
अगर 9th को कंपेयर करोगे, दिस इज माय 8th कार्बन हियर एंड दिस इज माय फर्स्ट कार्बन हियर एंड दिस इज माय हाइड्रोजन. तो अगर देखोगे 1, 9, 10 एंड CH3 के बीच में गॉश एंगल है 1, 9, 10 एंड CH3. तो अभी यहाँ पे कितने मिले एडिशनल? 2. टोटल कितना हुआ? Yes. 17 गॉश ब्यूटेन यूनिट्स. ठीक है, अभी जाते हैं यहाँ पे. इस पे कितना था? 12 था, प्लस था 0. अब हमने मिथाइल ग्रुप डाल दिया. अभी 7, 8, 9 एंड CH3. 7, 8, 9 एंड CH3. नेक्स्ट 2, 1, 9 एंड CH3. ये इजीली दिख जाते हैं. 2, 1, 9 एंड CH3. नेक्स्ट 5, 10, 9 एंड CH3. नेक्स्ट 4, 10, 9 एंड CH3. कितना हुआ टोटल? 4. अब ध्यान में रखो, दिस इज 16 टोटल. हाँ, अब सोचो कि यहाँ पे 2 मिला और यहाँ पे 4 कैसे मिला? द रीजन इज, इफ यूल सी दिस मिथाइल ग्रुप, ओके, इफ यूल सी दिस मिथाइल ग्रुप, it is axial with respect to the ring A. बट रिंग बी का अरेंजमेंट देखो. रिंग बी के अरेंजमेंट में देखोगे तो 4th वाला तुम्हारा एक्शियल है एक्चुअली, और मिथाइल ग्रुप तुम्हारा इक्वेटोरियल है. अगर रिंग बी को कंपेयर करोगे तो 4th एक्शियल है और ये जो मिथाइल है वो इक्वेटोरियल है. मतलब 1 CH3 is actually axial with respect to only one ring. With respect to other ring, it is actually equatorial bond. तो जो रिंग के साथ वो एक्शियल होता है ना, वो रिंग में ही वो एक्स्ट्रा गॉश ब्यूटेन दिखाता है. इसलिए तुम्हें यहाँ पे देखो 3, 4, 10 CH3 एंड 1, 9, 10 CH3 ही मिला. That was with respect to A ring only, because this methyl is axial with respect to A ring only. Whereas यहाँ पे अगर तुम देखोगे, this methyl group is axial with respect to A as well as B. So when it is axial with respect to one ring, it gives you 2 gauche butane. Right now it is axial with respect to both the rings. So इसके 2 gauche butane और इसके 2 gauche butane, तो मिला के हो गया 4. ये याद रखो कि तुम्हारे एंगुलर प्रोटॉन्स जो होते हैं या एंगुलर सब्स्टिट्यूशंस जो होते हैं, in case of trans it is axial with respect to both the rings, but in case of cis it is axial with respect to one ring while it is equatorial with respect to other ring. Okay, if I'll compare now after the substitution also, who is having more gauche butane units? Again cis. ओरिजिनल डिकैलिन में कितने गॉश ब्यूटेन का डिफरेंस था? 3 गॉश ब्यूटेन का डिफरेंस था. आफ्टर सब्स्टिट्यूशन इट हैज चेंज टू ओनली 1 गॉश ब्यूटेन यूनिट का डिफरेंस, बिकॉज यहाँ पे 17 आ रहा है और यहाँ पे 16 में आ रहा है कैलकुलेशन. सो ओरिजिनल डिफरेंस ऑफ 3 गॉश ब्यूटेन इंटरेक्शन in the cis and trans decalin is reduced to the 1 gauche butane, but that is also in the favor of the trans isomer, in the sense it is more stable compared to the cis isomer, but this time by how much energy? Only 3.35, because if you remember, I told you 1 gauche butane contributes to 3.35 kilojoule per mole. So this time the trans is stable only by energy of 3.35. Original decalin trans is highly stable because there we have the difference of almost 10.05 kilojoule per mole.